हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग पार्ट 15 की, जिसमें हम 10 MCQ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 141 टू 150 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए। दिस वीडियो इज फॉर इंजीनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर गेट एग्जाम प्रिपरेशंस और SSC JE, FPSC और एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ये वीडियो आपके लिए है। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग एंड लेवलिंग की काफी अहमियत है और इसमें से खामखा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपनी लर्निंग इनहेंस कीजिए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक CivTech सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर कम्युनिटी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सिविल इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में सर्वेइंग एंड लेवलिंग फॉर SSC JE पार्ट 15 आज हम डिस्कस करेंगे। MCQs 141 टू 150, जिसमें क्वेश्चन नंबर 141 says that the distance by which the last point of traverse falls short coincide with the starting point is called the closing error. Option A is right, option B is wrong. So distance by which the last point of traverse falls short to coincide with the starting point is called the closing error. This is right. So A is the correct answer. 142. The method of surveying used for determining the relative height of points on the surface of earth is called option A leveling, option B simple leveling, option C longitudinal leveling, and option D differential leveling. A is the correct option for this question. 143. A surface which is normal to the direction of gravity at all points as indicated by a plumb line is known as option A datum surface, option B level surface, option C horizontal surface, and option D vertical surface. So that surface is called a level surface, a surface which is normal to the direction of gravity at all points, and that is indicated by a plumb line. So B here is the correct answer. 144. An arbitrary surface with reference to which the elevation of points are measured and compared is called option A datum surface, option B level surface, option C horizontal surface, and option D is vertical surface. So arbitrary line जो है वो datum surface कहलाता है. So A here is the correct answer. 145. A line normal to the plumb line at all points is known as option A horizontal line, option B vertical line, option C level line, and option D line of culmination. That line is called a level line. A line normal to the plumb line at all points is known as level line. So C is the correct answer for this question. 146. A vertical line at any point is a line normal to the level surface at that point. Option A is yes and option B is no. So this is correct. So therefore A is the correct answer for this question. A vertical line at any point is a line normal to the level surface at that point. So A is the correct answer. 147. The vertical distance above or below the datum is called option A reduced level of point, option B elevation of point, option C height of instrument, option D either A or B. So either A or B is the correct answer for this question. The vertical distance above or below the datum is called reduced level of point, option B is elevation of point. So A or B are the correct answers. 148. The height of instrument is the height of center of the telescope above the ground where the level is set up. Option A is true and option B is false. The height of instrument is the height of center of telescope above the ground where the level is set up. So B is the correct answer. False. 149. A backside indicates the dash of the instrument. Option A shifting, option B setting up, option C height. So जब भी आप इक्विपमेंट को सेट करते हैं, आप सबसे पहले बैक साइड लेते हैं. So B is the correct option, setting. 150. The point on which the instrument is set up is called station point. Option A true, option B is false. So that is false. B is the correct answer for this question. So friends, this was part 15 of our ongoing video series on surveying and leveling, जिसमें हमने 10 multiple choice questions आपके साथ शेयर किए, starting from 141 to 150. So far अब हम 150 questions आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. I hope आपकी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो रही है surveying and leveling में. So keep watching these videos. Please like them, share and subscribe to our channel. मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे फर्दर पार्ट 16 में हम 10 MCQs आपके साथ शेयर करेंगे. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.